So in today's video I'm going to give my reaction video on this particular video with the title India is under the biggest threat which is uploaded on a YouTube channel called Iron Balls. So let's first check the channel. Let me tell you about this channel. So I was a member of this channel. I have subscribed this channel when it has almost 500 to 1000 subscribers, and I'm very interested in a video that the guy published. It's kind of a matching my thinking and vibe. uh, he basically able to make video on topics that I like or that I have an interest in. So I'm going to review react on the video and will give the feedback also. So let's start the video and see what exactly the video about. कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से, तो शायद आप करप्शन, गरीबी, आतंकवाद और क्राइम रेट, यही सारी चीजें बोलेंगे। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप सब इन चीजों में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि आपके सामने भारत के लिए आज जो सबसे बड़ा खतरा बन के बैठा है उसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं, इलीगल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। आज इंडिया में जितने भी झुग्गी झोपड़ी और स्लम एरिया है उन सब के जिम्मेदार ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये इलीगली सरकारी जमीन, रेलवे ट्रैक्स और फ्लाईओवर्स पे कब्जा करते हैं और क्राइम रेट बढ़ाने में देश की मदद करते हैं। आज देश में जितने So the particular line that he said in the video is that there are illegal immigrants who are living in India who are from Pakistan and Bangladeshi. So basically they are Muslim people, or we can say that the people who follow the Islam come to the India illegally and stay in India in a slum, which I have also noticed in my hometown that there are, even though I'm living in a very good city, I can say that it's a tier 2 city and in the process of becoming a tier 1 city, and it's kind of a, you can say, the developed city, but at quite some places I have seen there are a lot of slums, and you might not surprise that which caste of the people live there. Yes, so basically Muslim peoples are the ones who live in the slums, and I have seen that in many places in my city. I can say more than 10 to 15 places there are large number of people who's following Islam lives in slums, and we actually don't know that they are Indian citizen or just the illegal migrants. But I have seen that the government is taking a quick step to relocate them to their own country, and it is getting quite a popular. And just one thing I need to tell you that in a place where I live, in a city where I live, you can see the majority of Hindu people in a area from in a morning to 12 p.m. 12 to 11 p.m. at night. But after 11 p.m. or after 12 a.m. to the entire morning till the to the entire night till the morning 7 a.m. you will find that the entire area is covered by Muslim people. Like they are visiting the gardens, they are sitting in the road, they are visiting malls, like they have occupied all over the place after the 11 p.m. or a midnight. They came out of their home at night and occupied all the Hindu areas. Like I have personally remembered that my sister was not allowed to get out of home after 9 p.m. because the rise of the Muslim population in our area. ट्रैक्स और फ्लाईओवर्स पे कब्जा करते हैं और क्राइम रेट बढ़ाने में देश की मदद करते हैं। आज देश में जितने भी दंगे, प्रोटेस्ट और कम्युनल हेट हो रहे हैं उन सब में इनका सबसे बड़ा हाथ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? पाकिस्तान के साथ
वीडियोस को ध्यान से देखिए, ये आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान की वीडियोस लगी होंगी। This particular topic I want to tell you that I have seen it many places. Muslim people, the I can say that Muslim people are the people who do not want to go to a Muslim country. Instead, they go to a non-Muslim country and demand Sharia law there. As you can see, many videos, even in Germany, and we can't talk about London. London is totally a Muslim city, I can say. I have personally visited the London and will never go there again because it's not the London anymore that I was taught. It's totally a Muslim population. You will see the people wearing a white kurta and a girls wearing a black burqa. Total uncultural things, which I really hate about that. And entire market, they have occupied entire markets in London, and Muslim people only shops from the shop, only buy things from shops which Muslim people owns. So basically they are supporting their community, they are united and taking advantage of the liberal secular people. Like you can see why they need to protest for a Sharia law in a non-Muslim country. If you take the example of Germany take during the refugee crisis, Germany take over 1 million Muslim people in their country in 2015. Now they are the same people who are protesting to apply the Sharia law in Germany. I mean, what the hell is this with the people who are teaching them these things, and what are the mentality? Why they can't live in a peace whenever they go? First, they leave the country, their own country, because of all of this issue and the Sharia law itself. They are running from the Sharia law from their own country, and now they're demanding the Sharia law on a country which gave them asylum. It's a proper invasion. It's a strategic invasion of Islam. No one is talking about it. Everyone is know that Islam is all about controlling the world, the invasion the world in the future. I have talked with many Muslim people and I have many Muslim friends, but their mindset is clear. Islam is going to rule the world one day, and I am sure that it will going to be happen because just because of their unity. We are divided and they are taking advantage of us. We need to stop this, and for that we need to get united to stop this. लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियोस हैं जापान, जर्मनी, यूके और यूएस जैसी कंट्रीज की। आज यूरोप की ऐसी हालत हो चुकी है कि वहां की लड़कियों को घर से निकलने के लिए सुअर साथ में लेके चलना पड़ता है। Another Pakistani gang was convicted. Seven men have been found guilty of grooming abuse offences against two teenage girls in Rochdale between 2001 and 2006. लेकिन इससे इंडिया का क्या रिलेशन है? तो जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो शायद इंडिया का फ्यूचर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखने लग जाए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे इलीगल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इंडिया को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इंडिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों को बर्बाद कर रहे हैं, और कैसे धीरे धीरे अपनी सरकार बनाकर ये उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कितने इलीगल बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आज इंडिया में रह रहे हैं जिनकी वजह से हमें इतना बड़ा खतरा है। तो ये नंबर सुन के शायद आपके दिल में थोड़ा सा डर बैठ जाएगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका एस्टिमेट नंबर दिया है 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी आज इंडिया में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। हालांकि ये नंबर सिर्फ एक एस्टिमेट है क्योंकि इसको एक इंटेलिजेंस सोर्स से लिया गया है। रियलिटी में ये नंबर 20 मिलियन से ज्यादा भी हो सकता है। लास्ट पॉपुलेशन सेंसस किया गया था 2011 में, उसके बाद से हमें पता ही नहीं कि इंडिया में कौन कौन रह रहा है। और रही बात इलीगल पाकिस्तानियों की, तो इनका नंबर का तो एस्टिमेट भी हमें नहीं पता, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए ये रिसेंट केस ही काफी है। उत्तर प्रदेश में 22 पाकिस्तानी औरतों को पकड़ा गया था जो यहाँ पे सालों से रह रही थी, और इन्होंने 95 बच्चे पैदा किए थे, और इनका टोटल फैमिली मेंबर 500 से भी ज्यादा। Just look at this. This is their purpose, to grow population and rule the world one day. Just look at this thing. This 22 women illegally lived in UP for decades and have 500 plus kids. Like so basically we can say that Islam
treat the woman as just the object or a machine to produce child, nothing else. And you know what, that woman will be happily do that because they have been brainwashed from their childhood to believe what they are currently believing. So even we try to save them, the women's, even if we try to save the woman will not uh, not allow us to get her help, because she think or they think that what they are doing is right. And I have heard from so many Muslim people that childrens are given by Allah, which is their God. So that kind of thinking they possess, and that's why they giving birth to more and more childrens. Sometimes I feel that I don't know about that. I don't have that intelligence, but I I'm assuming that there might have some fundings or some Islamic groups, Islamic extremist groups who are responsible for this kind of strategy or activity. So they are basically the fundraiser, and they give that fund to raise the childrens and grow the Muslim population as much as possible. Just look at the people, they're wearing a black color burqa covering their entire face. What can I say, that world is changing fast, so fast, and these people are still covering their face in burqa on the name of their culture, the culture that just came recently in a 7th century. And we don't even know that the person who invented that specific set of rules is even a god or not. And I'm 100% sure that that person might not be a god, that simply a human being, or is it's a powerful king that that successfully able to brainwash all the surrounding people and imitate himself as a god in front of all the brainwashed people. There has to be something like that, because I don't believe that in the 17th century someone getting words from a god and creating this mess. Or there might be some another cases, like whether he is right, I don't know he's right or wrong. Let's assume that he was a right at that time, but with time the teachings and the lesson given by him is gradually changing, and people interpreting it as a bad way, or the way that it should not be interpreted. So the result of that bad or a wrong interpretation is this mess, the people covering their entire body and creating an awkward situation. These people are like oil. Like if you add rasna in water, if you add anything in water, if you add dirt in water, it will get mixed in a water. But if you pour oil in a water, it will not integrate. And these people are that oil. और सोचिए, ये केस सिर्फ एक फैमिली का था। फिर एक पाकिस्तानी फैमिली शर्मा सरनेम लगाकर 10 साल से बैंगलोर में रह रही थी। और ऐसे सिर्फ कुछ केस नहीं है, आप बस जगह का नाम लीजिए, गुजरात, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर। मैं गिनते थक जाऊंगा, लेकिन इनकी गिनती नहीं खत्म होने वाली। अब बात करते हैं कि यहाँ रहने से हम इंडियंस को क्या क्या झेलना पड़ता है और फ्यूचर में हमें क्या क्या और झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लोग आते हैं और इलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं। जितनी भी सरकारी जमीन है, वहां पे लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियां बनाते हैं। That point I need to use that. In my particular city, I have seen that same situation, like around the railway tracks, or below the bridge, or whichever the empty place they find, they started building their slums over there and growing their population. And I recently get to know about that. Just beside there was a building, and the reconstruction work is going on for that building. So, and at the same time the SMC of the municipal corporation of our city decided to
remove all the illegal immigrants, all the Muslim people from the our area. So after a couple of days of removing the illegal immigrants, the construction of the building stopped because the illegal immigrants are the one who are making that building and who are the person who are doing a low level job and living in a slum and earning a cheap amount of very small amount of money and building their slums there. So that things really need to change, and I also don't want that more Muslim people will come to my city because it's already getting messed because of the Muslim people. फिर धीरे धीरे एकड़ की जमीन पर कब्जा करके ये लोग उसको पूरी तरीके से स्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। जमीन आपने खरीदा है? नहीं, अपनी है जमीन। अपनी है जमीन मतलब खरीदा होगा तभी तो अपनी होगी। खरीद का ऐसे ही घेरी आके जमीन खाली थी आके घर बना लिया अपनी हो गई, ऐसे होता है। और अपने पड़ोस में किसी की जमीन खाली हो उसमें जाके घर बना के रहने लगेगा, कोई रहने देगा? जैसे कौन रहने देगा? तो यहाँ पे कैसे कोई रहने देगा? यहाँ से आपसे रह रहे हैं कितने साल हो गए? कितने साल हो? उनसे उससे पहले से नहीं रह रहे, 50 साल हो गए। और इनके झोपड़े आपको हर जगह मिल जाएंगे, फिर चाहे वो मेन रोड हो, फ्लाईओवर हो, नदी हो, यहाँ तक कि ट्रेन की पटरियों पे भी इन लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। और फिर यही लोग आधी आधी ट्रेनों पे पत्थर फेंकते हैं और ट्रेन को डिरेल करने के लिए पत्थर को पटरी पे रख देते हैं। आप लोगों को याद होगा कि वंदे भारत के टाइम पे भी इन लोगों ने यही किया था, जिससे 1000 लोगों की जान चली जाए। और ये सिर्फ यहाँ से नहीं रुकते, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सब क्राइम रेट में सबसे ज्यादा टॉप पे। क्राइम बाय फॉरेनर्स के रेट में इनका शेयर 25% है। और ये लोग चोरी, मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग और आतंकवाद सब में शामिल है। और जितने भी भिखारी आप सिग्नल पे देखते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग यही होते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर जिसे चाकू मारा था वो भी एक इलीगल बांग्लादेशी था। तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर जिसे चाकू मारा था वो भी एक इलीगल बांग्लादेशी। Even the Muslims are not safe among the Muslim. All these Muslims are either poor or the extremist Muslims. This problem is in extremism of any religion. Whether you take any religion, if there is an extremism, it will going to be a bad. I have like lot of Muslim friends who are very good to me. Like I can say the name of their God and they can say the name of my God. That kind of friendship we have. But they do not take the religions that seriously. We all consider the religions as a private thing, but there are some extremists in all religion, and for particularly in Muslims, Islam, the percentage of that extremism is way higher than any other religion. तो अगर अभी तक आपको सिर्फ इनके क्राइम रेट सुन के हैरानी हो रही है, तो जब आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, तो शायद आपको डर भी लगना शुरू हो जाए। तो इन लोगों में से किसी के पास भी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। मुंबई में अभी कुछ टाइम पहले कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था फेक आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ। और आपको सुनकर काफी हैरानी होगी, लेकिन ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वेस्ट बंगाल के एजेंट्स बनवाते हैं, सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए लेकर। उसके बाद ये लोग फेक राशन कार्ड बनवाते हैं और फ्री में यहाँ रहकर फ्री का खाते हैं। और ये तो मैंने भी खुद पर्सनली विटनेस किया है। राशन की लाइन में आपको 80% लोग यही मिलते हैं, और ये राशन कुछ 3-4 लोगों के लिए नहीं, 30-40 लोगों के लिए लेते हैं, सिर्फ एक फैमिली से। तो ये तो बात हो गई सिर्फ राशन की। That thing I also personally noticed, like when I went to the government office for the ration card, I have seen that the situation is really bad there. Like 70 to 80% of the people there are wearing burqa or a white kurta. Basically, they are the Muslim people. They are the people who oppose the Modi government but are ready to take the ration from that government. So I like 100% sure that there are some leaders, Muslim leaders, who are funding them. सही विटनेस किया है। राशन की लाइन में आपको 80% लोग यही मिलते हैं, और ये राशन कुछ 3-4 लोगों के लिए नहीं, 30-40 लोगों के लिए लेते हैं, सिर्फ एक फैमिली से। तो ये तो बात हो गई सिर्फ राशन की। ये लोग बिजली चोरी करते हैं, फ्री पानी लेते हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री फिक्स डिपॉजिट, और जितनी भी फ्री सुविधाएं सरकार देती है उसको ये सबसे पहले लेते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई फ्री स्टाइपेंड लॉन्च करती है तो वहां की हालत ऐसी हो जाती है कि किलोमीटर्स की लाइन में आपको ये लोग दिख जाएंगे। और अगर आप इनसे पूछें कि इनको हर चीज फ्री में क्यों चाहिए, तो ये बहाना देते हैं कि हम गरीब हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें इनके पास सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। इनके पास एसी, कूलर, सीसीटीवी कैमरा, टीवी, वो सारी लग्जरी मिल जाएगी जो शायद हम और आप लोगों के पास भी नहीं होगी। He also forget to mention the subscription of a Netflix and Jio Hotstar. तो देखिए ये घर है और यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और एसी भी लगी हुई है। यहाँ पर ये झुग्गी में गरीबी का आलम देखिए, एसी भी लगी हुई है।
और ये रोड साइड की जमीनों पे कब्जा करके I have even seen the Wi-Fi connection in slums, in Muslim slums. मार्बल और टाइल्स के साथ अपनी झुग्गियों को बनाते हैं और फिर उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं और रोड साइड शॉप्स खोल के ये लोग हजारों लाखों में कमाते हैं। झुग्गी जब आप नाम सुनते होंगे तो झोपड़पट्टी दिमाग में आता होगा, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो मैं चाहूंगा वैसे बाहर से दिखा दूं। ये देख रहे हैं बाहर टाइल लगी हुई है, मार्बल झुका पड़ा है, 4-4 मंजिल से कोई लग्जरी कॉलोनी हो दिल्ली की, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन ये कॉलोनी नहीं है, ये झुग्गी है। अभी मैं अंदर से जाके दिखाऊंगा थोड़ा सा। अभी मैं उन्हीं लग्जरी झुग्गियों के नीचे हूँ जो मैं दूर से दिखा रहा हूँ। पत्थर लगा हुआ है, नीचे आके देखा तो दुकानें भी हैं, रेंट तो क्यों है, मुझे किराया देता हुआ है। माला माल हो रहा है झुग्गी वाले, किराया वसूल कर रहे होंगे दुकान वाले से। तो बिजनेस मॉडल देख रहे हैं आप लोग, इन्वेस्टमेंट है कुछ भी नहीं और रिटर्न मिलता है इनको लाखों में। फिर उसके बाद ना कोई बिजली पानी हाउस टैक्स का पैसा इन्हें देना होता है, सारी सब्सिडीज इनको फ्री में मिलती है और इनकी इनकम पे भी 0 टैक्स होता है। और ये सारी चीजें इन्हें हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स के पैसों से मिलती है। इतनी फैसिलिटीज तो शायद अंबानी और अडानी को भी नहीं मिलती इस देश में। और फिर अगर इनके इलीगल Very right. Let me just change the speed. He might watch the video and I will get a copyright strike. कब्जों को हटाया जाता है तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। क्यों ना टूटेगा? अगर तुम तोड़ देगा हम उसको तोड़ेंगे। अरे ना साथ में तो और पिटाई, बच्चों को आगे कर देंगे, बच्चों को आगे जाने देंगे। Look what she said. Like if someone come to, like government come to broke the house that they have built on the illegal land, they will uh, use their children as an armor against the government. That kind of mentality they have, and if they push the children into this kind of condition, even government can't even could do something to this. क्योंकि तो They are playing the victim card. That's what I want to say. मैं अगर उसको तोड़ दूंगी। आज केजरीवाल था, आज झुग्गियां नहीं टूटी। मोदी का सेंटर में झुग्गियां तोड़ने का खिलाफ। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को रोड और फ्लाईओवर्स बनाने के लिए टर्न लेना पड़ता है क्योंकि ये दंगे करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बिलियंस में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ती है और टैक्स पेयर्स के पैसे और देश की इकोनॉमी दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर गवर्नमेंट इन सब लोगों को बाहर निकाल के फेंक नहीं देती, और अगर ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो गवर्नमेंट क्यों इनको फ्रीबीज बांट रही है? तो इसका जवाब है वोट बैंक। आपको क्या लगता है, ये सब हमारे देश में फ्री में रहते और खाते हैं? इनके पास सरकार चुनने का भी अधिकार है। हमारे That's the point, and that's the biggest fear of government, and that's the reason why they are not taking a strict action. Just imagine, guys, the people of India, I request you to understand that these illegal immigrants, these Muslim people, have a power to control our infrastructure, our railway, our government. And we are sitting here, our proud Indian, and just I want all of you to take a stand on this. These illegal Muslim people are the ones who are a burden to our development. All the politicians and all the government are feeding them just because of their vote, because they want that seat. काफी पॉलिटिकल पार्टीज इनको याद रखती हैं और बदले में इनसे वोट लेती हैं। और अभी तक हमने जितने भी फ्रीबीज गिनाए वो सब इन्हीं के लिए होते हैं ताकि पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा पावर में बने रहे। आप किसी भी स्टेट का एग्जांपल ले लीजिए, आंध्र प्रदेश में 12 बच्चों की फैमिली को 13,000 पर चाइल्ड बांटा जा रहा है, जिसका मतलब है एक फैमिली को 1,56,000 रुपए मिल रहे हैं। और दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार थी तो उन लोगों ने पूरे स्लम्स बसा रखे थे, और ये बात एक इलीगल बांग्लादेशी ने खुद ओपनली एक्सेप्ट की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो? बर्मा का। बर्मा से। कब आए थे आप? यहाँ 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। केजरीवाल की तरफ से मदद की गई है? केजरीवाल की तरफ हाँ। दिया है। यार अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं। क्या क्या दिया है आपको? दिल्ली दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार भी दे रही है? दे रहे। उनकी सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया, वो दिया, बस पैसा दिया आपको दिल्ली सरकार ने? हाँ दिया है, दिया है। केजरीवाल सरकार पैसा दे रही है? आज भी 3,000 दिए। इसको आज 3,000 भी दिए? कौन आया था दिल्ली में? कोई देना है तो क्या क्या सामान दिया जाता है? सामान तो बहुत सारे दिए गए, कूलर पंखा बहुत सारे सामान दिए गए, खाने पीने का कपड़ा लगता बहुत मतलब गर्मी है तो कूलर भी दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। जी। तो अगर So I hope you all guys see that the Delhi government, the Kejriwal, is providing that, is feeding the cancer just because of this seat, just because he want to win the seat of Delhi. So as a people of India, we need to understand that we should not obsess with some particular leader or a politician, because what they are doing we don't know. For what they are doing, for whom, that we also don't know. Just look at that, like they are charging money for men's, for their income tax, or it's a property tax, and all of our tax money is going
to that illegal Muslim immigrants. All of our money is converting in facilities to converting to provide the facilities to all the illegal immigrants. That kind of situation in we are, and we need to criticize this. If we do not criticize right now, this issue is going to be increased way more than that, and I'm 100% sure that Muslim will eventually take over if we not start to fight immediately. सामान दिए गए, खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, बहुत मतलब सामान गर्मी है तो कूलर भी दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। तो अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो ये इन लोगों का यूनिवर्सल तरीका है किसी भी देश को कब्जाने के लिए। इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो बारूद वाले बम फोड़ के कब्जा करो, या तो बेबी बम फोड़ के। ये एक फैमिली से 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, जिससे इनकी आबादी बढ़ती रहे और वोट देके एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये लोग अपनी सरकार बना ले। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए सिर्फ टेम्परेरी नहीं बल्कि फ्यूचर वोट बैंक्स भी है, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अपनी आबादी चूहों की तरह बढ़ाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल, जिनकी पूरी सरकार इन्हीं के ऊपर बनी है। ये लोग 10,000 में फेक वोटर आईडी प्रोवाइड करते हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स को, और इसकी वजह से बंगाल आज बांग्लादेश बन चुका है। और ये तो हम सबने आज देखी है। मुर्शिदाबाद, नवड़ा बाजार, दिनाजपुर, संदेशखाली, कोलकाता, ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां मुर्शिदाबाद, नवड़ा बाजार, दिनाजपुर, संदेश Like, why we are Hindu? Just the one country is there to live in is India as a Hindu. Why Muslim people try to invade India? Why they can't live in their own country? Why they want to spread to a non-Muslim country and want to become that country to a Muslim country? Why we can't live peacefully in our own country? Why we need to fight for our own rights in our area? कोलकाता, ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पे इलीगल बांग्लादेशी हिंदुओं के घर नहीं जला रहे, उनको जान से नहीं मार रहे, उनकी दुकान नहीं लूट रहे और हिंदुओं को उनके ही लैंड से हटाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। और ये सब पूरे देश के सामने हो रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि बंगाल में सरकार बांग्लादेश की है, इंडिया की नहीं। और ये सिर्फ बंगाल में नहीं, इंडिया के कई सारे स्टेट्स में आपको ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल जाएंगे जहां पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया के प्रॉब्लम है और मैं एक इंडियन हूँ इसलिए मैं बायस्ड हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेम पैटर्न आज पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है, फिर चाहे वो लंदन हो। What they are chanting is Sharia for UK. What the hell is Sharia for UK? What the fuck is government is doing there? Why are they not removing that people? And if they want Sharia law, they can go to the country where there is a Sharia law, like Afghanistan and Iran. But these people don't want to live there, because they also know that the Sharia law is bad for them, and also it is not aligned with their goal, which is to spread across the globe and rule the world. जर्मनी हो, न्यूयॉर्क हो, कनाडा हो। Here we are, $83,000 free a year, free benefits, free medical. I'm working my ass off. This guy's working his fucking ass off. Free rent, free car. She's probably gonna go back to a private BMW when she's finished here. Free gas, free everything. Yeah, here's the finger. Wonderful job. Welcome to Canada. या जापान हो। आज हर कंट्रीज मास इमिग्रेशन से परेशान है, और इसका रीजन एग्जैक्टली मैच करता है इंडिया से। वहां के लेफ्ट विंग लीडर्स जैसे पावर में आए, उन्होंने मास इमिग्रेशन पॉलिसी तुरंत अडॉप्ट कर ली और सीरिया, गाजा, पाकिस्तान और लीबिया जैसे देशों से रेफ्यूजीज को अपने देश में रख लिया, क्योंकि उनके लिए भी ये एक वोट बैंक है। ब्रिटेन में 44% वोट्स इन्हें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इमिग्रेंट से मिले थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन की रूलिंग पार्टी लेबर में 15 MP पाकिस्तानी है, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज वहां पे जितने भी प्रोटेस्ट, राइट्स और मर्डर्स हो रहे हैं उस पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। ब्रिटेन में 4% पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ने अकेले 64% चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किया है। 1997 से लेकर 2013 तक का एस्टिमेट बताता है 1400 छोटी बच्चियों का हुआ है पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के द्वारा। The whole nation is shocked by the gang scandal. Thousands of young teenage girls systematically raped over years by men of predominantly Pakistani heritage. Girls like Jane, who was repeatedly ganked to the age of just 12. The police found her being abused by an illegal immigrant, but instead of arresting the illegal immigrant, they arrested her. That is sick. लेकिन किसी ने भी इस पे आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनको डर था कि लोग उन्हें इस्लामोफोबिक और रेसिस्ट कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो कोई भी नहीं उठाएगा, और इसी वजह से इन गैंग्स ने सालों तक बिना किसी डर के ऑपरेट किया। Pakistan won't take back the Rochdale gang ringleaders. Adil Khan and Qari Abdul Rauf were jailed for leading a 9-strong gang who sexually assaulted 47 girls, some of them as young as 12 years. The rape, the immigrants people are raping the girls or the women of the UK, and the government of UK can't do anything about that rapist or their gang. And whenever any rape happen in India, they shout high. The UK government shout high that India is a not safe country to travel, but they are not seeing this fucking shit that
Pakistanis are raping their childs. They are not there saying that's it. If some another country show some report of rape, then they will stand high to oppose that. Years old after plying them with drink and drugs. This is one of the most recent grooming gangs as well. In fact, some of them were convicted just last week, I believe. Well, 4 of them were born in Pakistan. और ये सिर्फ छोटी बच्चों तक नहीं रुकता है। आज पूरे यूरोप में कोई भी लड़की सेफली बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि अगर वो निकलती है तो उसके साथ हैरेसमेंट होता है। Can you leave that? और सोचिए इससे बचने के लिए इन लड़कियों ने क्या किया होगा। आज सारी यूरोपियन लड़कियों ने सुअर को अपना पेट बना लिया और वो सुअर के साथ ही बाहर जाती हैं ताकि उनको कोई हैरेस ना करे। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी को इस तरीके से रहना पड़ता है तो उस देश की हालत कितनी खराब होगी। I'm not Muslim. I'm not Muslim. But you're not Muslim. I can help you. Yes, Hindu, yeah? Yes, Hindu. Yes, I can help you. I'm so अब इतना सब देखने के बाद आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि ये इलीगल इमिग्रेशन कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। ये एक ऐसा थ्रेट है जिससे पूरा यूरोप, जापान और यूएस कोई नहीं बच सका। और ये बस सोचिएगा कि ये सारी चीजें इंडिया में होने में टाइम है। जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, इंडिया को ब्रिटेन बनने में बस कुछ साल और लगेंगे। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन सब That's what I'm trying to say, that India is so near to fucking become a devastated country. It is on a way to its extinction of a Hindu culture, whether it is a Hindu culture, Christian culture, or any kind of other religion than Islam. Islam is going to take over the world, and it's already started. They are taking the advantage of our liberalness and our secularism. We have to open our eyes. That's why the Modi government knows this, and that's why Modi taking a lot of action for that, and that is the reason why all the Muslim are opposed to the Modi. चीजों से बच सके। तो जो सबसे पहला और इमीडिएट स्टेप हमें लेना चाहिए वो है इनके वोटिंग राइट्स छीनना। इनको सारी प्रोटेक्शन सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि ये एक वोट बैंक है। तो हमें एक ऐसा बिल चाहिए जिससे वोटर आईडी सिर्फ इंडियंस को ही मिले। वोटर आईडी को बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल से लिंक करना बहुत जरूरी है। फिर ये इलीगल बांग्लादेशियों का जो रूट है उसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। इनका जो सबसे फेमस रूट है वो है मेघालय में दावकी रिवर, जहां से एजेंट्स इन्हें 8,000 से 20,000 रुपए में बॉर्डर टपवाते हैं। साथ में और जितने सिमिलर वाटरवेज हैं वहां सिक्योरिटी बहुत बढ़ानी। And as he clearly said that the route we have, if we want to get rid of the Muslim immigration, illegal Muslim immigration, we have to find a root cause to eliminate that, and the root cause of that is to remove the voting rights of that illegal Muslim people. Whoever is living in entire India should only be vote if they are a legal citizen of India. पड़ेगी। और ये जितने भी एजेंट्स हैं जो इनके यहाँ लेकर आते हैं उनके ऊपर जितना हो सके उतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। और जो पहले से यहाँ पे आके झोपड़पट्टी में बस चुके हैं उनको सीधा सीधा निकाल के फेंक दो, क्योंकि इनका कहना है कि बेशक हम बांग्लादेशी लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं तो वो यहीं के हैं। और इस तरीके से लोग देश को कब्जा रहे हैं। तो हमें फैमिली ट्री भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर किसी के बाप दादा इलीगली यहाँ पे आए हैं और बच्चे यहाँ पैदा किए तो उन बच्चों को इंडियन सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं मिलने वाली। क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत सारा ग्राउंड रियलिटी देखा था कि यहाँ पे दंगे फसाद करने वाले कितने ज्यादा लोग हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? पाकिस्तान के साथ तो गलत हो रहा है। किसके साथ गलत हो रहा है? पाकिस्तान के साथ सब गलत हो रहा है। हालांकि दिल्ली की नई गवर्नमेंट ने डिमोलिशन वर्क शुरू तो कर दिया, लेकिन जहां पे इनकी संख्या 20 मिलियन है वहां पे 2,500 को हटाकर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम इनको रेलवे टैक्स हटाओगे तो फ्लाईओवर के नीचे जाके तंबू गाड़ लेंगे। ये एकदम सागर में बूंद निकालने जैसा है। अगर सच में कुछ इंपैक्टफुल करना है तो जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उन सबको पूरी तरीके से हटाओ, और जितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बाहर निकाल के फेंको। और एट लास्ट में जितनी भी फ्रीबीज और फ्री गवर्नमेंट स्कीम बांटी जा रही है उन्हें बंद करना पड़ेगा। ये सरकार जितना भी टैक्स का पैसा इनके ऊपर खर्च करती है वोट के लिए, उसकी वजह से हम लोग इतने पीछे। यही टैक्स का पैसा अगर डीआरडीओ और इसरो में लगाया जाता तो आज हम भी इंडिजीनियस डिफेंस और स्पेस क्राफ्ट इक्विपमेंट बना पाते और बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाते, जिससे हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन से बूस्ट होती। लेकिन नहीं, हमें तो इन सांपों को पालना है और इस मुद्दे को जितना हो सके उतना फैलाने की जरूरत है हमें। ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है लेकिन कोई भी इसका सवाल नहीं उठाता, क्योंकि सबको एक ही बात का डर है कि लोग उन्हें इस्लामोफोबिक बोलेंगे और उसके ऊपर कम्युनल हेट। That is the point. People are feared of get called Islamophobic or a racist. If a Muslim people say the bad thing about any other religion, then they are right according to all the people, fucking all the people. But if we say anything bad about a Muslim people, we will get called by Islamophobic by so many people. Even some of our own community member opposed us that you should not say something to the other people. But that's the root causes that we are divided internally, and that is the reason why British had ruled over us, because we are divided. now the British had ruled the world. Before that, the Mughals ruled the world. Now it's inevitable. I'm saying that it's inevitable that Muslim is going to take over the world in the near future. फैलाने के आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन इसमें इस्लामोफोबिक और कम्युनल हेट जैसी कोई भी चीज नहीं है।
ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। जब हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम इस्लामोफोबिक के डर से कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये सेम चीज यूरोप ने की और देखो आज उनकी क्या हालत हुई है। तो सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई पर्टिकुलर धर्म से तो उसकी हम इलीगल हरकतों को नजरअंदाज कर देंगे, तो इसमें कौन सा लॉजिक हुआ? चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो इलीगल काम कर रहा है तो उसे सजा मिलेगी और उसे कॉल आउट किया जाएगा। सिर्फ इस्लामोफोबिक, हिंदूफोबिक, क्रिश्चियन फोबिक के डर से हम क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ सकते। तो जितने भी भारतीय इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये सारी बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे पता है कि कुछ लोग भारत के दुश्मनों को डिफेंड करने जरूर आएंगे, और जो लोग भी इनको डिफेंड कर रहे हैं वो भारत में रह रहे हैं और भारत में खा रहे हैं, तो वो भारतीय नहीं, वो देशद्रोही है, वो गद्दार, क्योंकि ये लोग भारत का भला कभी नहीं चाहेंगे। ये चाहते हैं भारत हमेशा पीछे ही रहे। तो इसी का वीडियो खत्म करते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज है। क्योंकि And as you can see that this kind of video not usually get monetized by YouTube. There are only 44,000 views, which is not worth the quality of video he has generated, the amount of information he has gathered, and the amount of analysis he has done. That's the problem. Like sometimes I really thought that why these people are so different than any kind of other religions. I never see the fight between Christian or Hindu, Christian or Buddhism, Hinduism or Jainism. I always saw the fight of every religions against the Islam, because because Islam has problem with every other religions. They have problem with each and every religions. They don't like the people who follow the different religions other than Islam. Like in one of the video I have saw that the person is interviewing a Muslim people, and he's Muslim people say that he has a 7 kid. So the person just standing beside that saying that it was given by the Allah, the God in Islam, and he also said that he has a 7 kids. That's why he is a true Muslim. So that basically mean that if having a more childrens is related, is equally to the person is following the Islam, and which basically showing their goal of their religions to spread as much as possible like a cancer, and deteriorate or drastically. I'm out of word. I like the baddest word I can say. That kind of thing they want from the world. Just imagine the living in a world of a Muslim caliphate. How hard it would be. Like in India, we already shown that there are a lot of temples were broken by the Muslim rulers, and the mosque was built on top of that temple. There are so many examples. Just imagine that they say that Islam is a religion of peace, but their religion is spread not with a peace. It's spread with the force of a talwar, knife, and every possible way of forcing. Like no, they can't even spread the religion in a peace. They can't spread the religion with peace. Like they have killed many people, converted many people, and whoever is not able to give them benefit, or whoever denies to convert to Islam, they have killed that people. Many people are converted to Islam just because of their compulsion in our history. So that is the true face of Islam. But the main point is the Islam's ideology can never change, because if we want to change the ideology of the Islam or the people who following the Islam, we need to give him a good education. The point is Islam, people who follow Islam does not go through a does not go through a general education system. Muslim have their own schools where they have been taught Quran,
and their traditional or historic books. Like they have madrasa where they teach that the moon, the name of Allah is written on the moon. Like, how the fuck that can happen? And recently, when India reached to the surface of the moon, they the students of madrasa say that the Muslim students of a madrasa say that it is not possible. We can't go to the moon. Like, just imagine the how brainwashed these people are, and they can't even imagine that we can even reach to the moon. They have just the knowledge of Quran and their propagandic books that they have been teaching from their childhood. So that is obvious that they are going to have that kind of thinking because they have grown up in their environment. They haven't seen the world yet, and they are getting educated there with the purpose of spreading Islam to the world. So that is the reason. If we wa- it's all if we want to fight, but it's already too late for us to fight, but we can still have a chance. And what I suggest is that we have to educate these people, and we have to get rid of the extremist Muslim leaders. That's the only way we can grow their community and their people. We also want that they grow their life, because you may see that there are thousand or majority of Muslim peoples are living in slum, or they are poor just because they're following the Islam. If you take any Islamic country, they are poor. There are some rich countries, Muslim countries in Middle East, just because of they found the oil. If you see that before they found the oil, they are living very cheap quality of life. So that's what I'm trying to say. The Muslim, the whole culture is not compatible with today's modern world, and to get going with this world, they need to change. Otherwise, they will not survive. That's what I want to say. Though there are a lot of things to say in video, but I would like to conclude that video for now.